Shri Anurag Singh Thakur. Minister, Honorable Minister. Yes, we'll take it up. We'll take it up in the 0 hour. Please, please. Please, all this will not go in record. Please, please. Honorable Minister. Please. Yes, you do that in the 0 hour. You do that in the 0 hour. All right. All right, please sit down. Let the question hour continue. Sir, the Honorable Minister. A statement is laid on the table of the House. Yes. अध्यक्ष महोदय, देश में बिजली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और केंद्र और प्रदेश सरकारें उस मांग को पूरी करने में असफल रही हैं। जहां हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में बिजली प्रदान कराने के लिए अपना सहयोग दिया है। लगभग 6,500 मेगावाट की उत्पादन आज भी पनबिजली परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश में है और सन 2012 तक 10,000 मेगावाट तक की हमारी क्षमता होगी। मैंने अपने प्रश्न में मंत्री जी से पूछा था कि क्या कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपके पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है जिसमें हमने विदेशी सहायता के लिए आपसे आवेदन किया हो। आपके उत्तर में ना लिखकर आया है। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या 500 मेगावाट जो हमने अपनी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से लगभग 500 मेगावाट के उत्पादन के लिए 2100 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता के लिए कहा था और हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की ओर से जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं उनके माध्यम से जो पनबिजली Please ask the question. मैडम, दीज आर द क्वेश्चंस ओनली। एचपी पावर कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग जो ट्रांसमिशन के लिए आने वाले समय में जो उत्पादन होगा उसको सही समय में पावर ग्रिड तक दे सकें, लगभग 4500 करोड़ रुपए का उसके ऊपर और खर्च आएगा। तो ये दो डिमांड्स हमारी पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। तो उसमें मैं पूछना चाहूंगा कहां पर है, क्या उसको स्वीकृति दे दी गई है? अगर नहीं दी गई तो कब तक दी जाएगी, ताकि देश में जो बिजली की कमी है उसको भी पूरा किया जा सके? Yes, you've asked your question, yes. Madam Speaker, sir, the honourable member is correct that there is a big gap between the demand requirement and the availability of the power. There is no two opinion on it, and it is equally fact that even in the past 5-year plan period we have not been able to target which we ourselves fixed for the generation from different sources, hydel, thermal and all other host of other sources. But the limited question is that whether any proposal from the government of Himachal is pending with the ministry. So far my ministry is concerned, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, which deals with the external assistance, no proposal is pending. That I have stated. Secondly, in respect of the proposals, various proposals we received for the power development, hydel power development, thermal power development and various other multilateral projects we expose to multilateral agencies, to bilateral donors and aid givers. So far the multilateral projects are concerned mainly through the two institutions, ADB and World Bank. World Bank has two components, IBRD and IDA. We exposed our proposals which we received from the state government, and after they sanctioned those projects, those are being implemented. There is detailed mechanism for that. Similarly, certain projects we have received, we have exposed it to the various developmental agencies, ADB, World Bank, and some projects for bilateral assistance from the Japan, which I have given in reply to the statement
the statement which you have stated, that Japan has a system of 7-year rolling plan, of not 7 year, of rolling plan. And 7 such projects which have been exposed to Japan have been listed in these statements. Therefore, these issues are being addressed. And if the honorable members are interested to have the number of projects which have been exposed to international agencies, bilateral and multilateral, I can give it. Yes. चाहूँगा कि क्या हिमाचल प्रदेश ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी एक्सटर्नल फंडिंग के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि अप्रूव कर दिया गया है, अगर पेंडिंग नहीं है तो? Madam, the honorable member has, please just 1 second, I will clarify. I want to help you to put the question properly. Whenever we receive the projects, we expose it to the agencies, either World Bank or Asian Development Bank or bilateral aid givers like USA, UK, Japan, Germany. And then in consultation with their team, the projects are being examined at various stages, starting from the pre-feasibility to the preparation of the detailed project report. Therefore, whenever a project comes, we expose it to the agencies from which the state government is interested to borrow money, and thereafter the process starts. Therefore, it is not the question of approving or rejecting by us.